Good morning everyone. A very warm welcome to each and every one of you present today in the science class. Let us start with our class today, but before going ahead with the class, again I would like to share the same information, that is, please, it is my humble request, already your UT2 results have been shown yesterday and I hope all of you would have seen your results. Till now I have not seen it and neither I have any knowledge of what are the marks or everything which you have got. So please do share your marks in the query session or wherever you feel like, and at the same time please do not forget to take all the necessary precautions so that we all remain safe from this COVID-19. Is that clear? So let us start with our today's class. As I have already told you that today being most probably we have only one topic left today, that is chemical change. So today we will be finishing off our chapter, and at the same time, since we are going to finish our chapter here, so we'll be starting with our fair notebooks from the next week. But today I'll be sharing you some of the things related to that fair notebook, which you'll be noting it down just like your same things is there. That is, as all of you know, that you have to start with your define the following terms. So that is nothing but your keywords which are given at the back of your book. So today I'll be sharing you that as well, and we will be starting with our fair part today as well. Okay. Now one more thing going ahead with this, since from the last 2 to 3 classes what I remember is this that I'm continuously revising the entire chapters, that is from the first page up to the part till where we have completed. So the main purpose of revising is only this, so that you all would have a better understanding, and at the same time, if you have not read the chapter thoroughly, so you will be able to connect your previous portions with today's class. Okay, I know that most of you would have read the chapter thoroughly as it has been given in your homeworks as well. So I request all those who have not read the chapter thoroughly, please try to mark the hard words, the sentences or anything, and please do sort it out or clear it out in the query session window. Is that clear? So let us start with our today's class. Again we will be doing it in the same manner, that is, I'm sharing the screen to you. Okay, and then we'll be starting with it. That is, the very first part is this one, states of matter. When we are talking about, so states of matter basically is what? That is all those things which are present around us. They are basically present in only 3 forms, that is your solid, liquid or gas. So starting with the solid, liquid or gas, first we have discussed different types of okay, if we talk about the objectives of this lesson, that is what are the things which we are going to learn in this chapter. So this is your basically matter. Then what are the 3 states of matter? How matter is able to change its state from solid to liquid or liquid to gas, that is this part. Okay, and at the same time the changes which are taking place around us, that is your physical and chemical changes. Okay, so starting with this here, first we are going to see here, or what you are able to see, these are the different processes which we have already discussed in detail. Okay, but here it has been given in the introduction part. So again I am telling you this part, that is, this is nothing but the same part. Okay, I am sharing the screen to you. Well and good. Okay, so here this process is nothing but solid to liquid is your melting process, followed by liquid to gas is nothing but your evaporation. Gas to liquid, again it is your condensation, and liquid to solid is nothing but your freezing. Okay, so all the things which are present around us, they are composed of matter. All of us, we know this thing, that is each and every object or thing which is present around us. Exceptions are always there, like your feelings are there, your emotions are there, they are not included in the matter. Okay, so basically all these things which are present around us, they are composed of matter, and the amount of matter present in a thing makes up its mass. That is, just because of this matter only, the object is having some or the other mass or weight. Okay, and this space which is being occupied or being covered by any objects, that is known as your volume.
So I also discussed with you, I have also shown you by taking a simple example of any one box, or suppose this box only. If you remember, I have taken the length, breadth and height of this box, and at the same time I have shown you that this is your length, okay, this is your breadth and this is your height. So I told you that how when you are calculating area, so we are basically talking about the two-dimensional figures, that is your length and breadth. But if we are calculating volume, so here it comes out to be your length, breadth as well as your height. Okay, so now with this part what we are going to do is, that is matter is anything that has mass and occupies space. So all those objects which are having some or the other mass and at the same time they are occupying some space, they are known as your matter. Then we talked about what is this matter made up of. So all these matters, they are made up of the smallest particles known as atom, which combine together to form molecules. Okay, these molecules cannot be seen because they are very tiny. So we need a powerful tools such as your microscopes in order to see these tiny objects, because microscope helps in magnifying the size of the object so that we can observe the details of it. Okay, next we also discussed about the properties of these molecules, that is the arrangement of basically these molecules. So we have two things here, that is your intermolecular space and the intermolecular force of attraction. Okay, so the intermolecular space as well as the intermolecular force of attraction, both these things, they are very important in defining the different states of matter, and at the same time they play, just because of these two properties only the matter is able to exist in the nature. Okay, let us start with this part. So the different states of matter, we have discussed about three types, that is was your solid, liquid or gas. In the case of solids, we discussed that the molecules, they are very closely packed, tightly packed, and as a result of which they vibrate at their own positions, and since they are not able to move, that is why their shape and size, they always remain constant or fixed. Okay, and they are rigid as well. Rigid means what? That is, they do not change their shape very quickly or on applying a little amount of force into it. Moving ahead with the next part, that is when we are talking about the liquids here. So when we are talking about the liquids, so in the case of liquids, the intermolecular spaces are little bit more as compared to solids, or we can say that the molecules are loosely packed. So when these molecules, they are loosely packed, and at the same time the molecular forces, that is the intermolecular forces of attraction, they are weak enough. So just because of these two properties, the liquids molecules, they are able to move from one place to another by short distances, but within the boundary of that liquid only. Okay, now what you are able to see is that when we are telling the boundary, so boundary basically means what? That is, if you suppose this circle is representing the boundary of these molecules, so the molecules cannot go beyond this boundary. Okay, because the volume is fixed. ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से क्या होता है, इनकी बाउंड्री भी हमेशा फिक्स होती है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते हैं. Is that clear? So just because of these two properties, they are able to occupy the shape of the container in whichever container we are placing it. If we are taking 1 liter of milk or 1 liter of water and keeping it in a plate or in a bowl, bigger bowl, jar, conical flask or any other container, whichever one you feel like, these things, they are going to occupy the shape of that container. Okay, next I also discussed with you, that is whenever we are adding a spoon of milk or a spoon of sugar or salt into water, it disappears and gives or changes the properties of the water or provides some different taste to it, different color to it. Okay, why does this happen? Because since the water molecules, they have some space in present between them, so these spaces are occupied by the different kinds of molecules, that is the sugar molecules or the salt molecules. Okay, next we have discussed about the gases, that is all these gases, they are much more
far away, the molecules, they are much more far away from each other, and at the same time the intermolecular forces of attractions, they are very weak. And since the intermolecular forces of attractions, they are very weak, therefore they are able to move out of the boundary of the gases as well. Okay, that is, there is no such fixed boundary, and that is why there is no fixed volume of the gases. Okay, comparative properties we discussed: shape, solid, fixed. Liquids take the shape of the container, gases they don't have, because there is no such kind of boundary, and that is why the molecules can even go out beyond this thing. Okay, next we are talking about the volume: solid fixed, liquids fixed, gases again no fixed volume. The space between the molecules: negligible space, some space, lots of space. Okay, attraction between the molecules: very strong, not so strong, very weak. Movement of molecules: only vibrate at their fixed positions. Move around within the liquid. Within the liquid means nothing but the boundary of that liquid. Okay, move freely in all directions. Okay, next we have discussed the different kinds of change of states, or how the change of states are occurring, that is the different processes. Melting, that is the conversion of solid into liquid. The same thing, if you remember, that is why this solid is getting converted into liquid, just because of that whenever you are going to heat something, the molecules, they are going to gain energy, and as a result of which they will overcome the intermolecular forces of attraction, and the molecules will become far away from each other, thereby getting converted into liquids. Next we have also discussed about evaporation. Here also the same concept is there, that is the liquid getting converted into gas. So here also what is happening? The thing is same here, that is the liquid molecules, though they are very loosely packed, but still they are not very far away from each other. So when you heat this, again the liquid molecules gain some energy, and at the same time they overcome the forces of attraction and get converted into gas. Next, condensation. Here just the reverse process occurs, that is, there you are heating, so here you are going to cool it. So as soon as you are going to cool the gases, the energy will decrease, and as a result of which the intermolecular force of attraction will increase. And when the intermolecular force of attraction will increase, the molecules will come closer, and thereby the change of state will occur, that is, their state from gas will be converted into liquids. Moving ahead with the next section, that is the same examples, that is whenever we have kept cold water inside the glass. So what do we find? We find that some kind of water droplets, they appear on the outer surface. Okay, why do these water droplets appear? Because we know that the temperature of the glass as well as the water, it is much more less as compared to the temperature of the air molecules which are present outside in this environment. So when these airs, they come and strike with this glass surface, the molecules, they become cooler and they get converted from gas to liquids, thereby giving rise to water droplets on the outer surface. Okay, next we discussed freezing. Here also again, when you are we discussed about that refrigerators and everything, much more cooling, that is much more loss of energy, much more increase in the forces of intermolecular forces of attraction, that is the molecules, they become much more closer. Okay, thereby getting converted into solid. Effects of heating and cooling, always remember, heating always causes expansion. This expansion may vary depending on the type of matter which we have taken, that is, in the case of solids the expansion is little bit less, liquids little bit more, whereas in the case of gases maximum. Whereas if we talk about the cooling part, so in the case of cooling, the cooling always results into the contraction, that is the molecules, they come closer to each other, and as a result of which the change of state occurs in this case as well. Then we discussed about the thermometer, which is nothing but the clinical thermometer which has been shown to you here, which are used basically by the doctors to measure the temperatures of our body. Next, what we have seen here is that mercury is a kind of what? It is one of the kinds of elements which are present on this earth. Okay, and generally all the metals, they are solid except for this mercury, which is liquid at room temperature. Okay, so when we are talking about this mercury,
the bulb of the thermometer contains mercury, and whenever it is kept under the tongue or under the arms, due to the increase in temperature or due to the heat of your body, the mercury starts rising, and finally it stops at a particular level in the capillary tube, giving rise to the temperature, okay, of the body. Again, when you keep it out, again the mercury level falls down because contraction occurs due to the cooler part. Checkpoint, if you remember, I told you to, this was the homework of today. I don't know how many of you have done or not. If you have done, well and good. If not, excellent, superb. Okay, I can't help you with that. Next, let us move ahead with this changes in our surroundings. Physical change, that is all those changes which are reversible, they are known as your physical change, and you are able to get back your original substance in this case. Okay, now let us discuss about the chemical change. Okay, moving ahead with this chemical change, so first and the foremost thing I would like to share here, that is, when we are talking about the chemical change, basically, so chemical changes are those changes which do not get reversed. That is, most of the chemical changes, they are irreversible in nature. That is, एक बार हो गया तो हो गया, फिर हम उसको वापस नहीं कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, तो जैसे हम जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा अभी, ठीक है, बाय शोइंग इट. आई हैव द आयरन नेल्स विथ मी एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू टू कलेक्ट सम ऑफ द materials or things by which you can show this chemical change, and I hope the same from you today in the query window. Okay, I want each and every one of you to share some or the other objects with the chemical change. Okay, let us start with this part. So in the case of chemical change, the very first example which we have already discussed, पहले हम कुछ common examples देख लेते हैं. common examples का मतलब क्या है कि example वही है, लेकिन थोड़ा सा change कर देने पे वही example physical change भी रहता है और वही example आपका chemical change भी होता है. ठीक है, कैसे होता है आइए देखते हैं. हम ले लेते हैं आपका rolling of चपाती. ठीक है, so when we are going to roll the chapati, so this is your physical change, but if we are going to cook that chapati, so that becomes your chemical change. So chapati क्या है, common है. Okay, the only difference is that rolling or cooking. Okay, next we are going to go ahead with it, with this is, that is okay, souring of milk. Souring of milk is basically what, और सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, आप जैसे भी प्रोनाउंस करिए, साउरिंग और सोरिंग, ठीक है, दूध का खट्टा हो जाना. दूध का खट्टा होना बेसिकली मतलब क्या है कि दूध फट जाना. ठीक है, वंस योर मिल्क हैज बीन स्पॉइल्ड, ओके, यू कैन नॉट गेट बैक योर फ्रेश मिल्क अगेन और proper milk again. Okay, so this is also one of the chemical changes. Just like in the case of chapati, once it has been cooked, you cannot get back your chapati into the raw form, या फिर कच्ची लोई या आटा आप उससे वापस नहीं ला सकते. Okay, the same thing occurs in the case of your wood as well. Okay, that is wood when we are talking about, तो wood के भी दोनों cases हैं, physical change as well as chemical change. ठीक है, cutting of wood, फिजिकल चेंज, बिकॉज हर एक पीस जो भी कट होकर के निकलेगा, उस हर एक पीस में क्या रहेगा, सेम प्रॉपर्टीज होंगी वुड की, इसीलिए वो क्या है आपका फिजिकल चेंज. ओके, बट बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज. ओके, इन दिस वे दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच आर अकरिंग, एंड एट द सेम टाइम लेट अस कम टू द एग्जाम्पल ऑफ दिस आयरन नेल. ठीक है, आयरन नेल को हम हिंदी में कील कहते हैं, कील भी कहते हैं, कांटी भी कहते हैं. ठीक है, लोहे की कांटियाँ. ठीक है, आप देखोगे आपके घर में भी जैसे हम यूज़ करते हैं. ठीक है, आजकल हम स्क्रू यूज़ करते हैं. ठीक है, कांटी ना यूज़ करके हम उसको स्क्रू भी बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो हम जो आजकल के स्क्रू आ रहे हैं, दे आर बेसिकली कोटेड. कोटेड मीन्स वो एल्यूमिनियम की कोटिंग होगी उनके ऊपर, या फिर आजकल चाइना कांटी भी आ रही है. ठीक है, और सिल्वर कलर की कोटिंग होगी उनके ऊपर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. मैं आपको दिखाऊंगा प्योर आयरन. ठीक है, उसमें क्या होता है, जनरली आप देखोगे कि आपके घर में हैंगर्स को टांगने के लिए, या फिर आप अपनी की रिंग उठा लीजिए. ठीक है, वो सबसे आपका बेस्ट एग्जांपल होता है. ठीक है, की रिंग जब आपकी नई साइकिल होती है, तो इन दैट केस द की रिंग शाइन्स वेरी मच. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर निकल की कोटिंग या फिर स्टील की कोटिंग कर दी जाती है. ठीक है, आयरन के ऊपर फिर या स्टील का बना ही दिया जाता है. ठीक है, निकल या फिर क्रोमियम शाइनी करने के लिए उसको निकल या क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं. बट धीरे धीरे जैसे आपकी साइकिल पुरानी होती है, तो क्या होता है, आपके कीज़ और की रिंग्स और
साथ ही साथ आपके रिम्स जो पहिए होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, आजकल अलॉय व्हील्स आ गए हैं, ठीक है। तो अलॉय व्हील्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरानी वाली साइकिल्स की बात कर रहा हूँ और पुराने वाले बाइक्स की बात कर रहा हूँ, जब जिसमें स्पोक्स होते थे, तीलियाँ होती थी, ठीक है। तो वो आप देखते थे क्या होता है, वो उसमें जंक लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले आयरन नेल। अच्छा, पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आई एम शोइंग यू टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। बेसिकली ये देखिए, ओके, इफ यू कैन सी दिस पार्ट, ओके, सो दिस इज वन ऑफ द आयरन नेल्स, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये एकदम आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द आयरन नेल्स विच इज कम्प्लीटली फ्रेश और ब्रांड न्यू। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, इसको देखेंगे थोड़ा सा और पास ले जा करके, तो इसमें येलोइश कलर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसमें भी थोड़ा थोड़ा रस्टिंग शुरू हो गई है। और ये नेल्स मैं आपको बताता हूँ कि आई हैव ब्रॉट इट नॉट मोर देन 4 to 5 days अगो, ठीक है। इसके पहले नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन या हाँ मैक्स टू मैक्स 17 या 18 को मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। एंड वन ऑफ देम इन विच रिसेंटली द रस्टिंग हैज़ स्टार्टेड। अब इसको देखिए, ये वही आयरन नेल है, उसी का एक पीस है, बट ये येलो कलर का आप देखिए, ठीक है। अब आप इसको कंपैरेटिव प्रॉपर्टी में पढ़िए, ठीक है। नेल्स वही दोनों हैं, बस जगह अलग अलग थी, ठीक है। एक बहुत बाहर रखा हुआ था, एक अंदर रखा हुआ था। तो आप क्या देख पा रहे हो कि दिस वन इन दिस केस द रस्टिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, लेकिन ये भी एकदम ब्रांड न्यू है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, ठीक है, रस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है येलो येलो कलर का, आप देखिए ध्यान से, ओके। दिस येलो इज पार्ट इज नथिंग बट द प्लेस वेयर द रस्टिंग हैज स्टार्टेड। अब देखिए, इनिशियली व्हेन द रस्टिंग विल बी स्टार्टेड, वो बहुत ही येलोइश होगा, ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये येलो दिख रहा है, ओके। और आप इसमें देखिए, ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी येलो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो क्यों हो रहा है ये चीज़, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रू, ओके। बट नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ठीक है। आप अपने खिड़की दरवाजे पे भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ना ही ये हार्मफुल है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इससे आपको, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको चोट न लगे। ये फ्रेश था, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको रस्ट को पहचानने के लिए आप अपने ग्रिल्स पे लोहे की लकड़ी या मतलब ग्रिल्स या खिड़की दरवाजे जो भी हैं आपके, आप उस पर थोड़ा सा अपने हाथ रब करिए या फिंगर्स रब करिए, सो विल बी एबल टू गेट आइदर ब्राउन और येलोइश और ऑरेंजिश कलर। अब जैसे ये था, ये येलो है, मैं यहाँ पे अपने फिंगर्स रब करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सी, ओके, यू आर एबल टू गेट दिस थिंग। So this is what, this is nothing but the rust only, and rust is nothing but your iron oxide, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये आप लोग अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो दिस आयरन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है, जिसकी वजह से रस्टिंग शुरू हो गई। अब इसको जंक लगता है क्यों है, पहले वो समझिए। रस्टिंग ऑलवेज अकर्स जस्ट बिकॉज व्हेन द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन अकर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। ये अपने आप में ही वही बात है कि जब कोई भी आयरन के आर्टिकल्स मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, तो इनमें जंक लगना तय है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोटिंग्स कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे कि ये लोग एनवायरनमेंट या मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और वो चीज़ हमारी सेफ रहे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रस्टिंग और ज़्यादा होती जाएगी, तो इसका कलर और ब्राउनिश होता जाएगा, जैसे आप इसमें देखिए, इस केस में आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लैकिश, ठीक है। कहीं कहीं आपको हल्का येलो भी दिखाई देगा, और ज़्यादातर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एकदम ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। क्यों, ये ज़्यादा दिन से रस्टिंग हो चुकी है, और धीरे धीरे क्या होगा, इसका पूरा का पूरा शाइन चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो पाउडर मेरे हाथ में आया, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये क्या है, ये आयरन के ही पार्टिकल्स, ठीक है। आयरन अलॉन्ग विथ वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो आयरन ऑक्साइड, ये जो है ये कुछ नहीं बल्कि आयरन ऑक्साइड ही है, ठीक है। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि धीरे धीरे ये जंक लगते लगते एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा का पूरा आपका जो आयरन नेल है या फिर कील है, कांटी है, स्क्रू है, ये पूरा का पूरा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रस्ट में,
पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चीज़ें गायब हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ में जंग, हम कॉमन लैंग्वेज में भी कहते हैं ना कि ठीक है, बॉडी को मूव करते रहना चाहिए नहीं तो जंग लग जाएगा, दिमाग को यूज़ करते रहना चाहिए नहीं तो जंग लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जंग लगने का मतलब क्या है, वो ख़त्म, अब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ठीक, क्यों? इसका स्ट्रेंथ चला जाएगा, क्वालिटी चली जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, ये अपना डिटोरिएट करता रहेगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज मॉइस्चर एज वेल एज ऑक्सीजन, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर एनी काइंड ऑफ आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, आई होप अब इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज दिस। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द पार्ट्स विच हैज बीन गिवन इन द बुक। ठीक है, देखते हैं क्या उसमें दिया हुआ है। So what you are able to see, in a chemical change, one or more new substances are formed. We cannot easily get back the original substance. Burning a piece of paper gives out smoke and ash. Okay, so चलिए यहीं से पहले देख लेते हैं। Burning of paper gives us smoke and ash. So as the definition suggests that one or more new substances are formed. ठीक है, एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बन रही हैं। पेपर आपने लिया, एक सिंगल चीज़ था, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको बर्न किया तो फ्लेम भी आया, स्मोक भी आई, प्लस ऐश भी, जलने के बाद राख भी बची है। ठीक है, तो अब क्या है, वो आप पेपर वापस नहीं ले सकते हैं, तो डेफिनेशन में एकदम फिट बैठ रहा है कि हाँ, हम अपना ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं पा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम the new substances are also formed, that is your ash as well as the smoke. So therefore it is an example of a chemical change, that is your burning of paper, burning of wood, आप कुछ भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ को आप बंद करेंगे, that is giving rise to a chemical change only. Let us move ahead with some more examples here. Okay, in this case we cannot get the paper back from the smoke and ash, therefore the chemical change. Making cheese and curd from the milk, cooking food, burning fuels, rusting of iron and decomposition of dead plants and animals are some more examples of chemical changes. ठीक है, इन सारे केसेस में क्या है कि वी आर नॉट एबल टू गेट बैक आवर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे अब इसमें ये है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये रस्टिंग हो गई, तो अब इसे हम हटा नहीं सकते हैं, और जब हम इसे रगड़ेंगे साफ़ करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, उतना लोहा या फिर वो चीज़ नया सब्सटेंस। अच्छा हाँ, न्यू सब्सटेंस इस केस में कैसे बना वो समझिए। ठीक है, ये हमने लिया था आयरन नेल फ्रेश, ठीक है, तो हमने क्या लिया, आयरन लिया। ठीक है, आयरन नेल मतलब लोहे की कांटी, तो लोहा। ठीक है, बट व्हेन द रस्ट हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, तो अब ये येलो कलर का क्या है, ठीक है, दिस येलो पार्ट इज नथिंग बट योर रस्ट, दैट इज योर आयरन ऑक्साइड। तो लोहा भी है प्लस उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो गया, रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये कि रस्ट क्या है, दिस इज अ न्यू सब्सटेंस विच हैज बीन फॉर्म्ड। और हम अपना ये वापस, इसे हम कितना भी रगड़ लें, ठीक है, वो इसकी तरह देखने में तो होगा, लेकिन हमें ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। ओके, दैट इज वाई वी से दैट मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, that is basically this completes our entire chapter of states of matter। और मुझे नहीं लगता अब इससे बढ़िया आपको कुछ समझाया जा सकता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, डोंट फील शाई, प्लीज़ मेंशन इट इन द क्वेरी विंडो सो दैट इट कैन बी रिजॉल्व। ओके, मूविंग अहेड विथ फेयर नोटबुक पार्ट, मैं वो भी बता देता हूँ, आज ही से हम लोग शुरू कर लेते हैं, एंड रेस्ट पार्ट विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीक। सो स्टार्टिंग विद द फेयर वर्क पार्ट। और एक चीज़ और, पहले जाने से पहले, वो स्टूडेंट्स खास करके जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर डिफाइन द टर्म्स भेज दीजिए, डिफाइन द टर्म्स भेज दीजिए, वो लोग ध्यान से देखिएगा इसे। Okay, at the end here 3 only are there, that is the keywords which are being given here. So these 3 keywords, they are nothing but they are your define the following terms. Okay, so in this case, that is define the following terms. Here this you will be writing on the first page of your chapter, giving the heading states of matter with today's date as well. Date is very much compulsory. Okay, so put the heading of the chapter number as well as chapter name, and along with the heading define the following terms. In place of keywords you will write, keywords की जगह पे आप लिख दो define the following terms, and then you will write down this headings with the black pen and your answers or explanations with the blue pen. और please
फेयर कॉपीज़ खाली एक बच्चे ने मुझे शो किया, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, ठीक है, भले उसकी राइटिंग गड़बड़ थी, मैंने उस पर कमेंट भी किया कि हाँ प्लीज़ इफ़ पॉसिबल राइट इट डाउन अगेन, ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू शो मी द कॉपीज़, और या फिर हो सकता है तो आप लोग अच्छी हैंड राइटिंग में उसको कंप्लीट करिए, ठीक है, एंड प्लीज़ डू राइट इट डाउन इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए जितने अच्छे से हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी, and please don't forget to take all the necessary precautions. Okay, that's all for today. Thank you and have a superb day ahead.